बिकॉज ये एक बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है. देयर इज रिस्क ऑफ, देयर इज रिस्क ऑन, and then within the same day there is risk off and risk on, depending on who tweets and who says what, etc. तो इसलिए वो volatility जो है वो अपनी जगह बरकरार है. लेकिन for me, you know, the underlying pillars and the fundamental factors which are coming through. So from what I understand on equity front, 2,20,000 से ज़्यादा investors have entered the market over the last 2 years. And these are led by youth, which is essentially Gen Z, tech and digital access. इसी तरह जो अप्रैल का नंबर है, मैंने बात की मैक्रो इंडिसेस पे कि रेमिटेंसेस कहाँ हैं, आरडीए फ्लोज कहाँ हैं, एक्सेट्रा. बट अगर सिर्फ अप्रैल में आप देखें जहाँ वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा रही है, तो अगेन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट 24,000 न्यू इन्वेस्टर्स हैव एंटर्ड द मार्केट इन अप्रैल. This is highest ever in any given month. So I think from the equity side, we are indeed moving in the right direction. On the debt capital market side, from my perspective, we've actually gone into a reverse gear. मैं 2000 इन्होंने बात की 2001 में जब मैं यहाँ इवन एमरो के साथ एम्प्लॉयमेंट में था. At that point in time, Warda had gone into mini bonds, into the retail investor base. और उसके बाद ऐसा रिवर्स गियर लगा कि हमने DCM को वापस उठते देखा ही नहीं इस और उसमें obviously the banks played an important role, but this is something which we have to, because from my perspective this is an and discussion, this is not an and or discussion. And therefore, the focus that we need to have on the corporate bond market and how we take it forward. और उसमें जो आपकी तरफ से regulations हैं, ease of doing business है, Ministry of Finance की तरफ से अगर कोई taxation related या FBR related avenues हैं, we have to again collectively figure out how we get this DCM going as we move forward. Now. जो अभी आपने बात की है, the promotion of the investor education, financial literacy, market participation, awareness campaigns, to me this is a very, very important building block. लेकिन इसमें मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप इसको आप 6 साल से हैं इस इदारे के साथ मुंसलिक. We have to now move towards Gen Z and move towards youth and what they need and what they figure out is the way forward in terms of the awareness campaigns, etc., right? Because अभी ये जो हम पीवारा से हमने सीखा है 40 million crypto users, right? And how we want to move forward in terms of use cases on the tokenization side, in terms of licenses of the exchanges, etc. But this is being led by Gen Z. This is being led by the youth of this country. Actually, the government was behind the curve. ये तो हम जब चेन एनालिसिस हुआ हम 10वें नंबर पे थे, फिर 7वें नंबर पे आए, फिर पिछले साल जब हम 3रे नंबर पे आए. तो जी वज़ीर ख़ज़ाना गुफ्तगू कर रहे थे, मुखातिब थे. हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस.